Hi everyone, how are you? Welcome to our RANA SIR educational channel. Today I will talk on a topic whose name is plane motion in a plane. In this chapter I will explain the concept of law of conservation of linear momentum. In previous classes I have already explained its theory. Now here I will explain one times more and then I will solve some numericals which are based on that topic. Topic name is law of conservation of linear momentum. Therefore you concentrate on this topic to clear your knowledge, and also you also share this live video with your colleagues, friend and student so that they can also update their knowledge on this topic, how the law of conservation of linear momentum concept is used in the momentum. Okay, and simultaneously also you like this live video, and after liking then you also subscribe this educational channel more and more. Okay students, now one additional information I am going to tell you and you follow it positively, that will enhance your future. That is, first of all you have to take one notebook and one pen and then you have to sit at your location properly positively, and then you have to write all those informations which are available in your on the blackboard, and also those data which are spoken by me. Okay, so here I am going to explain the concept of class 11 physics in both medium, that is in English medium student who are reading in English medium, and also those students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can understand all these concepts easily. That is the concept of law of conservation of linear momentum, and also how we will apply this law in the numerical. So you concentrate on this live video to understand the concept of law of momentum, linear momentum properly. Okay student, so now I am going to start it positively. Now here I will write plus 11. Physics. That is in both English medium and also in Hindi medium. Okay student, so you concentrate here. For each and every topic I will explain in detail. Okay, now after explaining I will say this is the based on NCERT pattern, based on NCERT pattern. I will say here I am going to explain the concept of law of conservation of linear momentum. So here I will write law of conservation of linear momentum.
also written in Hindi, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय वेग संरक्षण का नियम. So I have written here. Okay, now here I will explain positively what is the concept of law of conservation of linear momentum, and then I will write one numerical, and in that numerical the concept of law of linear momentum I will explain with the help of numerical. Okay students, so you concentrate here to understand the concept of law of conservation of linear momentum and also its application, how this concept I will apply in the question. Okay, that is in numerical. So if any object I will say that is moving in a straight line, and I am saying this object is m1 and whose mass is m and its initial velocity is u1. So after some time another object which is also moving, this object is moving forward direction, but this is an object whose mass is m2, but it is moving with velocity in this direction. So this is the figure before collision of these two objects. One object is one whose mass is m1 and initial velocity is u1, and another object whose mass is m2 but its initial velocity is u2. Okay, so after collision means after some time both objects will meet at a point, but both objects will collide. So the diagram will be same. So here I will say this is the mass m1. So after collision, so mass will be same. After collision, mass will be same of the object 1, but second object will be also colliding. Second object is also colliding at a certain point. So mass will be same. So I will say here mass, this body has mass m1 and this body will have mass m2, but both will have changed the velocity, because after collision mass 1 has first object has mass m1 which has initial velocity u1, and second object with mass is m2 and it has velocity u2. This is the initial velocity when this object 1 is going forward direction, but object 2 is coming backwards direction. So after any instant of time, both objects will collide at a point. So the mass will same after collision of first object, mass will be same m1, and mass of second object will be m2, but its velocity will change because first object has velocity u1 and this is initial velocity, but after some time it will have changed the velocity that will be that is v1, and second mass will also have velocity v2. Okay, so I will use the concept of law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum, it means that वेग संरक्षण का नियम, it means that we will apply in this situation. This is the situation before the collision and this is the situation after the collision. Here I write this is the situation before the collision. Here I write before the collision. Before the collision, and this is the
This is the diagram after the collision. After the collision. After the collision. After the collision. Okay. So before the collision of first object, I will say M1 given and second object M2 U2, which this is the momentum of both objects separately. So I will write before collision M1 given plus M2 U2. This is the momentum of both objects before the collision. But after collision, I will say momentum of first object will be M1 given and M2 V2. But after collision, I will say M1 given plus M2 V2. Okay, and this condition I will say this is the condition will be as according to law of conservation of linear momentum. I can write according to law of linear momentum. Linear momentum. According to law of conservation of linear momentum, I write conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. Linear momentum I will write here M1 U1 plus M2 U2, and then this is the momentum before the collision I have written here. So after collision I will say M1 U1 plus M2 U2. This is the momentum after the collision of both object according to this way. In this case, I will say this is the required concept of law of conservation of linear momentum. So each and every student has to remember this formula. Okay, if there are two objects which are available before the collision, M1 U1 and M2 U2, so I will write the momentum of first object, that is M1 U1, and also second object M2 U2. So before the collision, I have both momentum as M1 U1 plus M2 U2, which is equal to, after the collision I will say first object will have momentum M1 U1 and also M2 U2. So after collision I will combine these two momentum as M1 V1 plus M2 V2. So according to the law of conservation of linear momentum, before collision and after collision momentum will be same. It means that if any object which is available and that object is working in a system, it means that any external force will not apply on that object. It means that that object will have that object has system, and in that system there will no change in information or any data or any energy. Okay, it means that momentum of any object, I will say if any object will not have any external force, it means that that object will have external force with E0. It means that that object will have in a system, and in that system there will no change in energy. So I can also say that if any system which has no change in energy, it means that no any information of that system will change here, no any of the value here, any data of that system will change, because that object here, that system has force 0, that is external force at 0. It means that all energy of that system is remain constant. Okay students, so according to this way I will say law of conservation of linear momentum. It means that any object which is not feeling any external force, if any object which is feeling an external force, it means that energy of the system will change. But any object which is not feeling any external force, it means that the system of that energy, yeah, that object in this system is existing
So that system will have no any external force. It means that there is no change in energy. It means that we can say that there is no change in information of the system, and there is no change in data of the system. Okay, students, so you have to follow it positively. Okay, this is the concept of momentum. This is the concept of momentum. Each and every means if any object which is a level and that object has mass m and velocity u. So momentum of that object is written as p is equal to m into u. It means that momentum is the multiplication of mass and also the velocity of that object, that is called momentum, and its unit is also written as mass is calculated in kg and also velocity is calculated in meter per second. So this is the unit of momentum. So I will say this is the unit of momentum, but it will be in MKS system. In MKS system, but in CS system I will say kg is calculated in mass is calculated in gram and velocity is calculated in centimeter per second. This is the concept of CGS system. CGS system. If any system which has external force 0, it means that that system has no change in energy of the system, and also in other words we can say that there is no change in information or change in data of that system. Okay, because if any system which is feeling having external force 0, so in that case I will say that will come in the under of law of conservation of linear momentum. Okay, so in this case we have to remember this formula. If any two objects will be available in before the collision, so I will calculate the momentum of each object and then I will take its summation. So after collision I will write like this way. So I will take the momentum of first object and also I will take the momentum of second object and then combine. So I will say momentum before the collision and after collision. So both momentum I will write. So there is no change in energy of the system, or there is no change in information of the system, or in other words we can say that there is no change in data of the system. That object will follow this condition. Okay, students, so you have to follow it positively. Okay, so this is the required concept of momentum and you have to follow it positively. Okay, so all information I have written here properly and you have to write all this information in your notebook for further revision. Okay, if a student who are understanding these concepts, so you like this live video and also you share this live video with your colleagues and students so that they can also update and improve their knowledge on this topic. Okay, and simultaneously you subscribe this education channel. And now I am going to also translate all the information in Hindi, so student who are in Hindi medium, though the student can also understand its concept in detail in Hindi. Okay, and also though the students are living in UP board, though the student can also understand this concept in detail because this is an important topic. Now this concept I will explain with the numericals, so how we will apply this concept in numerical. Okay, so concentrate here each and every topic I will explain in detail. Okay, now I am going to translate all the information in Hindi. Okay, यहाँ पर कहा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को हिंदी में कहा जाता है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक वेग संरक्षण के नियम में कहा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के मिलीमीटर वस्तु, जब कोई भी वस्तु या वस्तु करने जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी थिंग्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, वो सभी चीज़ें वस्तु होता है या उसको ऑब्जेक्ट के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो कोई भी वस्तु है, अगर कोई भी वस्तु होता है, यहाँ पर हमने दो वस्तु लिए हैं। एक वस्तु है जिसका मास होता है, मास की पृथ्वी के द्रव्यमान करते हैं जिसका द्रव्यमान E1 है और प्रारंभिक वेग V1 है। और दूसरा
वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m2 है, उसका इनिशियल वेग प्रारंभिक वेग u2 है। ओके, इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन जो फिगर आप देख रहे हैं, यह फिगर जो है कोलिजन के पहले, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, ये टक्कर के पहले ये सिचुएशन है और टक्कर के बाद जो होता है ये सिचुएशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट जो होता है एक दूसरे में कोलाइड करता है, टक्कर करता है, तो उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी में, वेग में या स्पीड में उसका परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग v1 था, लेकिन यह v1 जो होता है v1 में चेंज हो गया, क्योंकि उसका चाल जो होता है या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सिचुएशन उसका वेलोसिटी जो होता है चेंज होगा, उसका वेग जो होता है चेंज होगा। उसी तरीके से मास m2 है, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा वस्तु, उसका द्रव्यमान जो होता है m2 है, और उसको जब कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद जो होता है मास में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए वो क्या है, वो छोटा छोटा पार्ट में होता है, लेकिन सारे पार्ट को कलेक्ट करेंगे उसका मास सेम मिलेगा। लेकिन उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, चाल है, उस चाल और वेग में जो होता है परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट इंफॉर्मेशन विल अकर देयर। ओके, तो यहाँ पर कोलिजन के पहले का फिगर बताया दिखाया, यहाँ पे ऑब्जर्व करा रहे हैं, और कोलिजन के बाद के फिगर को भी हम ऑब्जर्व करा रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे मोमेंटम क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु होता है किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और उस सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उस वस्तु पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी वस्तु पर जीरो होता है तो उसका मोमेंटम जो होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है। इसका मीनिंग यह निकलता है कि उस सिस्टम में जितनी भी पूरा का पूरा जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, वह एनर्जी कॉन्स्टेंट होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम का जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि उस सिस्टम में जो भी डेटा है, जितने भी डेटा अवेलेबल है, उन डेटा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं P बराबर m/u। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को संवेग के नाम से जानते हैं। संवेग जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल होता है मास, और उस वस्तु के वेग के गुणनफल, उस वस्तु का मास और उस वस्तु के मास और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। उसी को मोमेंटम कहते हैं। अगर ये मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है, पूरा का पूरा एनर्जी जो होता है कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरह का चेंज परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर मोमेंटम या कांस्टेंट आ गया, इसका मीडियम को उस सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। और ये भी कह सकते हैं कि उस सिस्टम में जितनी भी डेटा है, डेटा अवेलेबल है, उसको शब्द में कह सकते हैं कि जितनी भी डेटा अवेलेबल है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। और इस मोमेंटम का जो हम मोमेंटम होता है हिंदी में मात्रा के नाम से जानते हैं। हम मास को जो द्रव्यमान को होता है किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं, तो एम की जगह पर किलोग्राम में लिख सकते हैं। और जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिखता है, इस इनिशियल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। यह यूनिट जो हमने लिखा, यह मात्रा जो लिखा है, या एक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, उस सिस्टम का नाम एम सिस्टम होता है। एम के मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम के नाम से हम जानते हैं इसको। इस सिस्टम में हमने इसको टाइप किया है। उसके बाद से हम इसको चेंज किया है, हम किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, या हमारा ये सिस्टम होता है। और मीटर पर सेकेंड को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन करके हम मात्रा को प्रॉपरली देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम यहाँ पर कहें, जब हम दो वस्तु को लिखे हैं, दोनों वस्तु का साइज जो था अलग है। साइज का मतलब आकार, और उसका वेट, उसका भाग जो था अलग अलग है। इस वस्तु का द्रव्यमान को m1 कहे हैं, और इस वस्तु के वेग को प्रारंभिक वेग को e1 कहे हैं। इसी तरीके से दूसरा जो वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान m2 होता है, और उसका
इसका जो होता है प्रारंभिक वेग जो होता है इनको हमने कंसीडर किया। ये डायग्राम जो हम एक यहाँ पर बैच किए हैं, तो इस डायग्राम को यहाँ पर हम प्रॉपर्ली कहेंगे कि यह इंफॉर्मेशन जो है कोलिजन कटर के पहले का सिचुएशन है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि यह फर्स्ट जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यह फर्स्ट जो होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट को किसी क्षण जो होता है एक किसी पॉइंट में देखता है कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, टक्कर करने के बाद हम देखते हैं कि द्रव्यमान जो वस्तु वाला है उस वस्तु का द्रव्यमान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। सपोज कीजिए टक्कर के बाद जो होता है इस मास इस द्रव्यमान में इस फर्स्ट वस्तु के जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है, लेकिन सारे पार्ट को हम कलेक्ट करेंगे तो उसका मास सेम मिलेगा। तो लेकिन उसका वेलोसिटी जो होता है चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी जो होता है टक्कर के बाद शुरू होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट उसका वेलोसिटी होगा। उसी तरीके से मास M2 भी जब टक्कर करेगा कोलिजन के बाद वह पार्ट जो होता है छोटे छोटे पार्ट में टूट सकता है, उसका चेंज हो सकता है, लेकिन सारे पार्ट को हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके हम वेट करेंगे तो हमको मास में द्रव्यमान मिलता है मिलेगा, लेकिन उसका भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम करता है कि अगर मोमेंटम जो तक कोलिजन के पहले निकालेंगे और मोमेंटम जो तक कोलिजन के बाद निकालते हैं तो दोनों बराबर होता है। इसका मतलब इसका मीनिंग निकलता है, इसका न्यूमेरिकल मीनिंग कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जो होता है किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स जो होता है अप्लाई नहीं होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट है या उस ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है उस सिस्टम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब उस सिस्टम में जितने भी एनर्जी था उस एनर्जी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब एनर्जी को हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उस ऊर्जा में किसी तरह का उस सिस्टम की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उस सिस्टम का जितने भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में किसी तरह का चेंज या बदलाव नहीं होगा। या तीसरे शब्द में कह सकते हैं कि अगर उस सिस्टम में जितने भी डेटा है, जितने भी डाटा रेगुलर उस डाटा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के लिए यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले को क्वेश्चन में यूज है। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने विद्यार्थियों के साथ, बैठे स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट को अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड आई विल राइट one numerical. That numerical I will use the concept of law of linear momentum and law of conservation of linear momentum, and then we will use this concept, and after using and I will find the requirement of the question. Okay students, so question I am going to write that is conceptual and you have to take its meaning properly and positively. Okay students, so positively I am going to erase this, and after erasing this and then I will write numericals and then I will solve. Okay, so I hope that each and every student who are reading more individual good student can understand this concept clearly. Okay, so here I am going to erase it, and after erasing I will apply this concept in the question. Okay, so here I am going to write question number 1. A person which is moving with cycling या bicycle
velocity I will say 5 meter per second, and that person is throwing a stone along same direction, along same direction, with velocity 10 meter per second, and stone has mass, and stone has mass 0.5 kg. The person and side area by speed both has made higher has mass 50 kg. Find the changing velocity of the coin. Find the changing velocity after throwing the stone. After throwing the stone. So these are the informations I have written here in one question, and you have to learn it, read it properly, and after reading it properly, all the informations which are given in the questions properly you have to note it there, and after noting then you have to use the concept of math, the derivation of linear momentum, and then you can find the requirement of the question. We have to find its velocity value. Okay, what is the changing velocity? You have to find its value. Find the changing velocity after throwing the stone. Okay, so first of all I will give its solution. Before giving its solution, first of all I will write all information, and after writing all information then I will give its proper solution. Okay, so first of all I am going to tell you its question meaning, so you will understand, and after understanding you will give its appropriate solution. One person is moving with a cycle, that is with a bicycle, and that person is throwing a stone along the same direction in which direction the bicycle is going now, and that velocity of the person and the velocity of the person and also the cycle is given here 5 meter per second. Both cycle and person speed is given here 5 meter per second. Now stone is moving when person is throwing a stone along the same direction, so that along the right direction stone is moving with velocity 15 meter per second. This is written here 15 meter per second. So with 50 meter per second stone is moving. Okay, now so we have to find the requirement of the velocity change when the stone is moving with velocity, and then
person and also cycle, that is bicycle will move another speed. That speed I will calculate and then I will subtract that speed from the previous speed to start getting the change in velocity. Okay, so all information I have written here, and then I will explain all the information in this way. Student who are reading it in Hindi, those student can also understand all the sentences of this question. Okay, यहाँ पर कहा गया है कि एक साइकिल है, एक साइकिल और एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, दोनों साइकिल और व्यक्ति जो मूव कर रहा है एक स्पीड से, वो स्पीड यहाँ पर दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं। लेकिन उस दौरान जो पर्सन के पास होता है एक स्टोन है, उस स्टोन का मास दिया गया है, उस स्टोन का मास दिया गया है, उस स्टोन का मास दिया गया 5.5 kg मास दिया गया है। उस स्टोन का मास होता है 0.5 kg होता है, उस स्टोन का मास दिया गया है। अब कहा गया है कि जब उस स्टोन को वो पर्सन जो होता है उस जिस डायरेक्शन में साइकिल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इतने वेट का जो होता है एक स्टोन है, उस स्टोन को जो होता है 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो होता है उसको स्लो कर रहा है, उसको फेंक रहा है। फेंकने के बाद से जो होता है उस पर्सन वो पर्सन और साइकिल भी मूव कर रहा है। फेंकने के बाद से जो होता है पर्सन और साइकिल भी मूव कर रहा है। तो पर्सन और साइकिल के वेग में क्या परिवर्तन होगा कि नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल में 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, लेकिन जब स्टोन को फेंक रहा है उस केस में जो होता है वेलोसिटी स्टोन का 15 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो वो पर्सन जो होता है और साइकिल के साथ मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी कितना हुआ, अच्छे इन वेलोसिटी भी है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस concept easily. Okay, now I will also give its proper solution, so you concentrate here, and if you are understanding, so you like this slide video and also you share this slide video with your colleagues and students so that they can also update their knowledge on this topic. So properly I am going to give you solution. First of all, I have to write here solution. Okay, and after writing solution, then I write here given that so that information I have here. So I will say mass of the person and the mass of the cycle, that is given here. Mass of the person and mass of the cycle both given here at 50 meter. So that person also had 1 stone, and that stone had mass 0.5 kg. So I add these two values. So after adding, I will say this will be the 50.5 kg. So this is the situation, and in this situation I will say person and cycle with stone each moving with velocity given, I will say that is u, and its value is 5 meter per second. Okay, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पर्सन और इस साइकिल दोनों मूव कर रहा है, लेकिन पर्सन के पास इसमें स्टोन है, उस स्टोन का मास जो है 0.5 kg है। तो दोनों जो है एक साथ, ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है एक साथ मूव कर रहा है। इस केस में वेट कितना होगा, और इस केस में दिया गया कि इसे वेलोसिटी प्रारंभिक वेग का मान 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर नाउ। अब कहा गया कि जब स्टोन का मास है इसका वैल्यू जो होता है 0.5 kg है, तो इस केस में जो होता है हम कहेंगे U1 जो वेलोसिटी है, U2 वेलोसिटी होता है, वह वेलोसिटी जो होता है स्टोन का है वो ऑलरेडी दिया गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो होता है 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया। तो जो स्टोन है उस स्टोन का मास जो होता है 0.5 kg है, और उस केस में उसका वेलोसिटी जो होता है 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद से जो होता है पर्सन जो होता है उस स्टोन को जो होता है इस वेलोसिटी से फेंक देता है। फेंकने के बाद जो होता है साइकिल और उस पर बैठा हुआ जो पर्सन है उस पर्सन का मास जो होता है हम जानते हैं साइकिल का मास पर्सन हम कहेंगे
पर्सन का मास, पर्सन मास ऑफ पर्सन जाएंगे पर मास ऑफ पर्सन और मास ऑफ साइकिल या बाइसिकल वो ऑलरेडी दिया गया 15 kg। पर्सन का मास और साइकिल बाइसिकल का मास, पर्सन का मास और बाइसिकल का मास, बाइसिकल का मास जिसे बाइसिकल और जिसे पर्सन का मास और बाइसिकल का मास ऑलरेडी दिया गया है कितना 50 kg दिया गया है इसका मास। और इसके दौरान जो वेलोसिटी मालूम है उस वेलोसिटी को फाइंड करो। तो जब पर्सन और साइकिल मूव करता है तो पर्सन के बाद स्टोन है उस केस में मास जो होता है 50 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 kg। उसके बाद से इस केस में वो तीनों ऑब्जेक्ट जो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव कर रहे हैं। उसके बाद से जब इससे स्टोन मूव कर रहा है तो 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो उस स्टोन का मास 0.5 kg है। अब हम इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्सन का मास और बाइसिकल का मास दोनों का मास कितने kg है 50 kg है। लेकिन जब वो मूव करता है तब स्टोन को फेंकने के बाद उस केस में वेलोसिटी नहीं दिया गया, इसलिए इस वेलोसिटी को वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, सो आई विल यूज हियर द कांसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम फॉर गेटिंग इट्स सॉल्यूशन। ओके, सो प्रॉपर्ली हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो जब सिचुएशन पहले था उस केस में m1 प्लस m2 इंटू ऑलरेडी दिया गया u1 ये वैल्यू बराबर होगा जब स्टोन को थ्रो किया है m2 और इसके करस्पॉन्डिंग वेग दिया गया u2 प्लस जब पर्सन का मास और स्टोन का मास 50 kg दिया गया तो इसलिए तो हम यहाँ पर सब पर्सन का मास ऑफ द पर्सन मास ऑफ द बाइसिकल और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी नहीं दिया गया, वी हैव टू फाइंड दैट वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज द रियल कांसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। जब ऑब्जेक्ट जो होता है, जब तीनों ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर कंबाइन है, पर्सन और पर्सन के साथ एक स्टोन है और दूसरा जो होता है साइकिल है, उस तीनों का मास भी कैलकुलेट किए, वो तीनों ऑब्जेक्ट जो होता है गिवन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जब उसी डायरेक्शन में जो होता है वो पर्सन जो होता है उस जो स्टोन पर रखा था उस स्टोन को थ्रो किया, उस स्टोन को यूट्यूब वेग से या वेलोसिटी से थ्रो किया, उस वेलोसिटी का मान ऑलरेडी दिया गया है तो वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद से 22% का मास और मास दिया गया है और इस वेलोसिटी जब स्टोन को थ्रो कर देगा तो इस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, इसलिए आई सपोज दैट वेलोसिटी इज v। ओके, सो दिस इज द रियल concept of law of conservation of linear momentum. Okay, I will use this one and after using I will find the solution of the required question. Okay, so above information that is able to question properly I will erase and after erasing I will give the its appropriate solution. Okay students, I hope that you are understanding it very easy way. So you like this slide video and also you share this slide video with your colleagues and students so that they can also improve that is update and they develop their knowledge on this topic. And simultaneously you also subscribe this educational channel and notification. So positively I am going to erase the question and after erasing it I will put the value of m1 m2 u1 m2 u2 and also mp and also md, and
then we will calculate the value of B, and then I will put exchange because initial velocity that is given 5 meter per second, and we will get the value of V, and after taking the place, then I will get a value, and that value will be the same in the initial and final velocity. So this is the required concept, and you have to follow it. So you concentrate here because it will have too much time slot, and I will give after completing this question, and then I will make the communication with you. So you concentrate on this topic. I am going to give it solution. Okay. So firstly I am going to erase it, and after erasing I will give this solution. Okay, students. So I hope that you are understanding. So M1 plus M2, that is given in M1 plus M2 I have calculated here 50.5. So here I write 50.5 in the place of M1 plus M2, and in the place of M1 I have to put here 5. So here I will put 5, and then M2 is given here 0.5 kg, so I will put here 0.5. The value of U2 is given here 15 meter per second, so I will put there the value of mp plus md. This is the mass of the person and also the mass of the cycle, that is bicycle. It is given here 50 kg, so I will put here 50 kg. But how which velocity is moving I don't know, so therefore I am putting here v. Okay, so I will use simple calculation. After calculating I will get the value of v. Okay, so positively you. So here I will say 50 into 5 into 5, and here I will transfer all data, and then I will write like this. So I will put here 50 into v. Okay, so I will say 5 25, I will put here 25, and then 5 25. Okay, five 5 2 and 5 25. So I will put here 5 25, and then 5 5 plus 2 7. So I will put here decimal after. So I will put here 50 into here into is given. So here I will write 50. Okay, so I will subtract from this to this. Okay, so I will subtract here 2.5, and here I will 7.5. So this will be 0, 12 minus 7. Here will be 4, and here will be 2. Okay, so above that I will erase. So after erasing I will say here. So here will be 2, 4, and 5, which is equal to here I write which is equal to 50 D. So 50 D. So this is the left hand side data, and this is the right hand side data. So left hand side data, and right hand side data. Total left hand side data I will transfer in right hand side data I will transfer in left hand side, and all left hand side data I will transfer in right hand side. So there will no change in my solution. Okay, student. So properly you have to follow it. So I will write here 50 V, which is equal to 245. So V is equal to 245 divided by 50. So I will say so with 24.5 I can write like 5, because with this 0 I will put one decimal place, and after dividing with 0, so I will write 24.5. Right now I am going to divide it into 5. 5 from the 5 4 20, and I
I will put there 5 point and then 45. 5 9 9. So I will say, so below data I erase, and after erasing I will get the requirement. So here I will say V is equal to 4.9 meter per second. I have got this value 4.9 meter per second. So we have to write change in velocity. So change in velocity. Change in velocity is equal to v1 minus v. So the value of v1 already I know that is 5 meter per second. So I will put here 5 minus in the place of v. I have put here 4.9 meter per second. So this will be meter per second. So after subtraction I will write. So 5.0 I can write here, 4.9 I can write. I will substitute 10 minus 9 that will be 1 point, and then I can write here 0.1 meter per second. This is the change in velocity. So change in velocity will be as change in velocity. So I write the proper change in velocity. Change in velocity is equal to 0.1 meter per second. So this is the requirements of my course. Okay, students, according to this we have to keep the proper solution of the question by using the concept of law of the conservation of linear numericals. Okay, students, I hope that you are understanding solution of written question clearly. Okay, therefore I am saying you like this video and also you share this video with your colleagues and students so that they can also update and develop their knowledge on this point. Okay, and simultaneously to subscribe this educational channel more and more. Okay, students, now if students who need to read the concept of mathematics and also solution of mathematics according to the concept, so for the class 12, class 11 and also class 10 properly. So in both in my video section properly I have arranged all data in the playlist section and in both, and you learn each and every chapter and its solution properly. Okay, so all data are available from the class 10 to 12. Class 10 mathematics, class 11 mathematics and also class 12 mathematics, and I have also prepared and uploaded all data in both the Hindi medium and also in the English medium. So students who are reading in English medium are suggested both students can take this advantage, and also the students who are reading in Hindi medium are both students can also take advantage because all data are available there. So class 10th mathematics and class 11th physics and class 12th physics, all data are available there. Okay, so properly go there and from there you can read easily because all the informations are free online coaching classes. Therefore you take advantage more and more. Okay, thank you for watching this live video, and always I will be you on the same time, that is 30 minutes past to 7 o'clock to 8 minutes, 30 minutes past to 8 o'clock. This is the time slot and you can post it for me. Okay, so thank you for watching this live video. I will meet you on the same time next day on the same time. Thank you for watching. Jai Hind.